Okay, so we'll be starting with paper 2, and I think people who will come in the class can have the copies, but for the online students, I'll get that uploaded today, right? And I think it should have been uploaded, but it's okay. I'll get it uploaded by today, and then you can refer to the syllabus. And apart from that, one more thing, that the approach in paper 2 is going to be different in paper 1. ठीक है, किस तरह से हमारा पेपर 2 में अप्रोच रहेगा? First we'll discuss that, and then we'll start with the syllabus. I'll discuss lightly the syllabus with you, that what are the topics. Superficially we'll go through the topics, and one by one syllabus has not been uploaded. Yes, Tanishka, I'll tell them to upload it again. I'll formally mail them. Okay, so I got a copies in the class for the people who will come, and for the online students I'll get that uploaded. You don't need to worry. Come inside. Okay, now take the syllabus copy. Take the syllabus copy. Good afternoon. How are you? Not good evening. It is not good afternoon. आप ठीक हो आप? Good. हाँ, for you also, yes. Give it to me. Now you will feel good because paper 2 fresh start हो रहा है. ठीक है? From here, actually your syllabus is getting started. Your Indian geography, it is light also. This is a good news for everyone, that this is a lighter subject, lighter part, paper 2, than the paper 1. Paper 1 is more of a technical, जहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा समझने की जरूरत पड़ती है. पर पेपर 2 में ऐसा नहीं कि आप बहुत लाइटली ले लें इसको. बट इफ आई टॉक इन कंपैरिजन विद पेपर 1, डेफिनेटली इट इज ऑन द लाइटर नोट. ठीक है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी है, you know about India, and then you've gone to the places, people are coming from different states, they know their states very well, and you have been reading about it from a long time, so it becomes easy. Paper 1 में क्या है, that we have already taken people who were there in the classes. So paper 1 में there is more of a technicality which is attached. Paper 2 में भी है, पर बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है, okay. For example, अगर मैं बात करूँ physical settings of India, right? In this you will understanding about the physical settings. How are the physical features, relief, topography of India. ये हम GS में भी पढ़ते हैं. So एक बहुत बड़ा overlap है पूरा paper 2 का Indian geography के साथ, which is your general studies when you do your geography subject. तो ये बहुत बड़ा आपका overlap हो जाता है वहाँ पे. So physical settings is topography, relief features. We will study about all that. उसके बाद आपका फिजिकल सेटिंग्स के अंदर और भी पार्ट है, जैसे आपका मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून एंड रेनफॉल पैटर्न्स, फिर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, फ्लड, ड्रॉट्स, क्लाइमेट रीजन, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन. एंड देन इट विल बी योर स्ट्रक्चर एंड this thing, structure and relief, right? Physical settings आपका first part है. Second part will be your, I mean the second subtopic is your resources. Resources will be your all the resources, whether it's renewable, etc. Land, surface, ground water में किस तरह के resources मिलते हैं, energy, minerals, biotic, marine, forest, wildlife, ये सभी आपका resources के अंदर आएगा. And then energy crisis has to be also a part of it, because अगर ये resources खत्म हो जाएंगे, so how you will manage, that is also something you need to learn. Then third is your agriculture, very important, right? I'm just superficially introducing all the topics. Do not worry that you have not got the syllabus. You will get the printout in the meantime. Okay, tomorrow it will be uploaded. Okay, next is agriculture में क्या क्या है आपका infrastructure हो सकता है. ठीक है, agriculture में what all we will study. In agriculture we will study about infrastructure. Can you just switch on the fan, Rahul? Infrastructure, right? Next we'll study about irrigation, seeds, fertilizers. Irrigation, seeds, fertilizers, right?
Then institutional factors, land holdings, land tenure. Okay. Then land capacity, agroforestry, green revolution, significance of dry farming, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स एक्सेट्रा, राइट। फिर हम आ जाते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज इंडस्ट्री। दिस इज योर फोर्थ टॉपिक, योर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में वी विल सी वेयर द मेजर इंडस्ट्रीज आर सेटअप, वहाँ पे क्यों है, हम वहीं पे क्यों सेटअप कर रहे हैं इंडस्ट्री, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर दैट। सो सबसे पहले देखेंगे एवोल्यूशन कैसे हुआ इंडस्ट्रीज का, हाउ इट हैज बीन स्टार्टेड, व्हाट इज एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री। देन वी विल सी लोकलाइजेशन फैक्टर कि वहीं पे कॉटन इंडस्ट्री क्यों है, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर मिनरल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज व्हाई इट इज देयर ओनली, सो वी विल स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलरली। नेक्स्ट केमिकल इकोनॉमिक जोन लिबरलाइजेशन, सारे टॉपिक्स इसके अंदर। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। Fifth is your transport, communication and trade. This is why I'm writing for the online students, because you have not got it. Transport and communication. That how the transport is being taken from one, because supply chain management is very important, and supply chain management you cannot afford to take without transport. Supply chain matlab kya, that one goods are being taken to another places, and that's how your necessities are being met from one place to another, क्योंकि वहां पे resource नहीं है, so that has to be transferred definitely. Railways, waterway, airway, pipeline, etc. Policies, export, processing zone, development, communication. फिर आ जाएगा आपका सेटलमेंट्स। देन इट इज गोइंग टू बी, सेटलमेंट्स आपका बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमने पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स में किया था, वैसा ही है, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स वाला ही टॉपिक है, पर अब हम इसको किस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, मोर ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव, मोर फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। आई टोल्ड यू देयर इज अनदर सेक्शन इन दिस where regional development and planning, it comes in your paper one also, पॉपुलेशन सेटलमेंट पे, और यहाँ पे भी आपका सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ इज योर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की ज्योग्राफिकल बेसिस क्या है, स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन क्या है, न्यू स्टेट्स क्यों, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया, जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया। देन टेंथ इज योर कंटेम्प्रेरी इशू। नाइन्थ क्या है राहुल? हाँ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है पढ़ने, व्हाई, बिकॉज अदरवाइज नथिंग इज गोइंग टू मेक सेंस, बिकॉज जब तक हम अपनी बाउंड्रीज के रिलेशंस अपने नेबर के साथ सही नहीं करेंगे तो ट्रेड वगैरह इट इज नॉट पॉसिबल टू हैपन। टेंथ इज व्हाट, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, कि अभी क्या इश्यूज है विच कंट्री इज फेसिंग विद, right, what are the major issues that one need to take care of, ठीक है, which is environmental hazard, landslides, earthquakes, principle of environmental impact, deforestation। अब इस सिलेबस को, इतने बड़ी सिलेबस को you don't need to get afraid of, ठीक है, because like पेपर वन इतना बड़ा सिलेबस है, पेपर टू भी वैसे ही होगा, सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट वन बाय वन, लाइक इन बिट्स एंड पीसेस, ओके। आपको किसी को भी यू डोंट नीड टू जस्ट गेट अफ्रेड ऑफ इट कि क्यों कैसे, एंड हाउ यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट, दैट इज नॉट योर headache, that is the headache of mine। I have to complete the syllabus of yours, and then आपको बस ये समझना है कि what is your job, अब आपको क्या करना है, your target is to understand। सी, अगर हम फिजिकल सेटिंग्स करते हैं, सो टेक टॉपिक वन बाय वन। सबसे पहले अगर जिन लोगों ने जीएस कर लिया है वो पेपर टू में बैठे हैं मेरी क्लास में, दैट्स ब्रिलियंट, दैट्स गुड इनफ, क्योंकि आपका कुछ ओवरलैप होगा, ये ज्यादातर आपका सिलेबस ओवरलैप है। एज आई सेड, जिन लोगों ने जीएस नहीं पढ़ा है और वो मेरी क्लास में बैठे हैं, उनको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज द वे आई विल टीच यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आपका इनफैक्ट जब आप जीएस क्लास करेंगे वो आपके लिए बोनस हो जाएगा, ठीक है। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि हमने जीएस क्वेश्चन नहीं किया है अब कैसे होगा,
हाउ यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट दैट आपको क्या करना है, दो चीजें करनी है. देन दिस इज कॉमन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज आपको जो करंट अफेयर्स में है पार्ट, वो आपको जरूर ऐड करने. सी देयर इज नथिंग, यू वोंट बी एबल टू मेक सेंस ऑफ द सिलेबस अगर आप करंट अफेयर्स अपने खुद ऐड, जितने मैं करा रही हूँ दैट आई डू, बट आपको अपनी तरफ से भी करंट अफेयर्स ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है, इफ समथिंग हैज हैपन समवेयर देन यू हैव टू ऐड. रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव से भी आपको ऐड कर, मतलब कोई भी पर्सपेक्टिव, रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर हो, कुछ भी नया आ रहा है देन यू हैव टू ऐड. ठीक है, उसका सेंस आपको, रेलेवेंस आपको बनाना पड़ेगा. रेलेवेंस के बिना कोई भी सब्जेक्ट क्या है बहुत ज्यादा, इट्स जस्ट लाइक यू आर जस्ट रीडिंग इट, मतलब उसके उसका सिर्फ वो लाइफ है, बस उसके अंदर कहते हैं ना कि देयर इज नो स्पिरिट, राइट. ठीक है, सो इट्स जस्ट लाइक दैट. आई डोंट वांट यू टू स्टडी द थिंग्स लाइक दैट. आई वांट कि आप दोनों चीजें कंबाइन करें. आप करंट अफेयर्स भी इंकलकेट करिए, उससे सब्जेक्ट इंटरेस्ट, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे चली जाती है जब आप इसको अप्लाई करते हैं. और नोइंग द फैक्ट दैट ज्योग्राफी ऑप्शन के अंदर जो आपके सिलेबस आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग डायरेक्ट एनी मोर. वो अप्लाई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं. दे आर नॉट आस्किंग यू द क्वेश्चंस डायरेक्टली. ठीक है, आपने 5-6 क्वेश्चंस करे, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा मॉडिफाई करके, ऐसा नहीं है. दे आर अज्यूमिंग कि आपको ये तो पता ही होगा ऑलरेडी, इसके आगे का वो लोग पूछ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दे विल ट्राई टू आस्क रिसोर्सेज. आपको फॉर एग्जाम्पल कोई थ्योरी, आपको रिसोर्सेज के बारे में आपने पढ़ा, एंड देन दे विल आस्क व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, हाउ डू यू जस्टिफाई इट, राइट. सो इस तरह से क्वेश्चन जब आएंगे तो डेफिनेटली उनको ये एक्सपेक्टेड है, आपको ये तो पता ही होगा, नाउ टेल अस दिस, another question that they will have. So इस बार कभी अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शन का पेपर 2 उठा के देखेंगे तो दैट इज नॉट इजी, वो इतना आसान नहीं है, राइट. रूरल अर्बन फ्रिंज के बारे में पूछ रहे हैं, जस्टिफाई, राइट. हाँ तनिष्का, वी हैव डिस्कस इन द क्लास. मैंने एक क्लास पेपर एनालिसिस मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, पेपर 1 और पेपर 2 का. whenever you get the chance just have a look. doesn't matter आपने आज से ज्योग्राफी ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट किया है, या 1 महीना हुआ है, या 2 मंथ्स हुआ है, या 1 साल हो गया आपको, दैट डजंट मैटर. पेपर एनालिसिस यू कैन डू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द जर्नी. ठीक है, उससे आपको क्या मिलेगा, एक रफ ओवरव्यू मिलेगा दैट आपको किस तरह से चीजों को अप्रोच करना है. आपको कंटेंट पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ क्रक्स समझना है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इन दैट. ओके, यू हैव टू जस्ट गेट द एसेंस. अब अगर आप इसके अंदर इफ यू आर नॉट एडिंग द करंट अफेयर्स, तो आपको ये क्या होगा, आप लर्न तो कर लेंगे पर आप समझ नहीं पाएंगे बात के लिए. ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, आप लर्न करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट डन इट फुल्ली. आपने स्पिरिटली आपने काम नहीं किया है, तो क्या होगा बाद में जाके आप देयर इज अ चांसेस ऑफ फॉरगेटिंग इट. मगर मगर आप अगर एग्जांपल्स के थ्रू याद करेंगे, और डेफिनेटली पीवाईक्यू तो विदाउट any doubt I discuss PYQ in the class, I give as assignment, right, वो तो चलता ही रहेगा. पर इसके अलावा भी what you have to do, प्लीज आप करंट अफेयर्स ऐड करिए. जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें भी से भी ऐड करिए. whenever you get the chance, whenever you get the any news which is relevant to this, आप इसमें ऐड करिए. ठीक है, किसी somebody has any doubt about this, please ask me. Just go through the syllabus once. Take 2 minutes, go through the syllabus, and then we'll start with the syllabus. डायग्राम्स बहुत बनाने हैं, अभी इसमें ही सीख लेना कि कितने डायग्राम्स बनाने पेपर 2 में. ठीक है, इंडिया का मैप, इंडिया के माइंस, इंडिया का एक एक चीज यू शुड नो. ट्राई टू ड्रॉ द सिलुएट्स लाइक दैट वेरी क्विकली एंड ट्राई टू मेक इट. यहाँ पर मार्किंग स्टार्ट डूइंग लाइक दैट. इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्रीज में you start making the silhouette like that and start marking. For example, industries are present there, this is present there, start marking like that. बहुत इमेजेस आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, बट rather than going बस सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए यू कैन गो फॉर दिस थिंग कि आप गूगल पे आप जाके यू कैन सर्च कि जो भी आपको मैप सबसे ज्यादा इजी लगे यू कैन ड्रॉ इट.
Ma'am, is mapping is also included? Yes, I will. The way I'll teach, mapping will be included automatically, because I don't explain the things without using the map. I use map oftenly, right? I will also use PPTs in between to show the map, right? That will be also included this time, because I need to refer to map again and again, right? So I will refer to PPTs this time. Okay, only for the map, not for the written purpose, because I know then people will get bored if they'll not write. Ishan, is it clear to you? Because formally, officially today your classes are starting. Ishan? Yes, ma'am. It's Okay, clear. good. Okay. So starting with, there's one more person who needed to be added. I think Farsana, right? I think she has not joined the lecture. Okay, no worries. Start with physiographic of India. Physiographic of India. Write down first point about India. About India. First point, write down. India is the seventh largest country. India is the seventh largest country in the world in terms of area. In terms of area. Full stop. It lies on the Indian plate. It lies on the Indian plate, which is northern portion of, which is northern portion of Indo-Australian plate. In the northern portion of Indo-Australian plate. Full stop. The Indian subcontinent, the Indian subcontinent is surrounded by different water bodies. It is surrounded by different water bodies and is easily recognizable and is re, easily recognizable on the world map. Now write about the location of India. The Indian mainland extends between Indian mainland extends between extends between 8 degree 4th north and 37 degree 6th 37 degree 6th north latitude, north latitude, and from 68 degree 7 east and 68 degree 7 east to 97 degree 25 east, 25 east longitude, longitude. And how many of you are okay with the concept of latitudes and longitudes? Quickly. Dipali, are you okay with it? Rahul? Piyush, clear? Ishan, do you know the concept of latitude and longitude? Now, towards there in my class, she knows. Achha, okay, Ishan, very good. ठीक है. Thus, full stop, thus,
The latitudinal and north-south extent, that means you're talking about this length, this one, north-south, this extent, okay? The latitudinal or north-south extent is 3,200, is 3,214 kilometer, is 3,214 kilometer, and east-west, east-west extent, east-west extent is 2,933 kilometer, is 2,933 kilometer. Full stop. India accounts 2.42%. India accounts 2.42%. This data is very important. When I'm making you write all the data, you make sure either you write with same pen से लिख सकते हैं पर उसको फटाफट underline कर लीजिए या फिर you make any mark so that whenever you have to search for the data you know where to search it. ठीक है, या तो आप रेड पेन से उसको मार्क कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर डेटा शॉर्ट में लिख सकते हैं. Right? India accounts 2.42% of the total world, of the total world land area. Isn't it like an irony that 2.42% out of the 100% we only have 2.42%, but if we talk about the world population, it is we are having like 1.2 billion, that's making the major chunk of the population that we are contributing across. I mean, in the world population, our contribution is so high. Where, but our land, right, area, territorial distribution wise हम बात करें, the territorial contribution, the territorial area on which we are living is very very less, which is only 2.42%. ठीक है. Write down next point. India lies entirely in the India lies entirely in the northern hemisphere. Northern hemisphere. This is your northern hemisphere, right? Northern hemisphere, southern hemisphere, right? India is like entirely in the northern hemisphere and eastern hemisphere. Why eastern? Because from the green which we are having, you're this prime meridian, right? Prime meridian says east side we are having what? All the eastern countries lying in the eastern hemisphere. इससे west में western hemisphere. ठीक है? Now write down. It divides the country into almost two equal. कहाँ तक लिखा आपने? East hemisphere. Full stop. Now write down the Tropic of Cancer. The Tropic of Cancer. 23 and a half. 23 and a half. 23 and a half north. 23 and a half degree north. Passes through the center of the country. It almost divides the country into two parts. Okay? Always it will be written like almost. ठीक है, सिर्फ perfectly divide नहीं करता है इंडिया को in the two halves, almost divides the country into two halves. What I'm talking about? I'm talking about Tropic of Cancer. The Tropic of Cancer, 23 degree 30 north, passes through the center of the country. Passes through the center of the country. Full stop. It divides the country into almost two equal halves. It divides the country almost into two equal halves. Northward of this latitude is called North India. Northward of this latitude is called North India, and southward of this latitude is called South India,
and southward of this latitude is called South India. Latitude, ये जो आपका 20.5 degree है, this one, इसके नॉर्थ में आप you will call it as North India, right? उसके साउथ में you call it as South India. Write down. Similarly, 82 degree 30 east, 82 degree 30 east longitude, 30 east longitude passes from the middle of the country, passes from the middle of the country, marking it from the different color. This one passes through almost from the middle of the country. This is 82 degree 30 east, passing through the middle of the country, 82 degree 30 east longitude. Full stop. It is known as standard meridian of the country of India. It is known as standard meridian of India. It is known as standard meridian of India. Full stop. India is the largest country. India is the largest country in the terms of area and population in the South Asia. India is the largest country in the terms of area and population in South Asia. Full stop. It is surrounded by ocean. It is surrounded by ocean. Full stop. It is strategically located in the. It is strategically located in the Indian Ocean. It is strategically located in the Indian Ocean. Full stop. It commands sea routes. It commands sea routes between Europe and Africa. It commands sea routes between Europe and Africa, comma, Southeast Asia, comma, Southeast Asia, comma, Far East Asia, and Oceania. Oceania. Full stop. It is because of this that India shares good trade relations. It is because of this that India shares good trade relations between many countries, between many countries since ancient times. Since ancient times. Just revise it. I'm just coming in a bit. Hold on.
All right, done. So this is about, see, why India is having a strategic location. Now, when I say India is having a strategic location in Indian Ocean, then we all know that this Indian Ocean is really important for the trade routes, right? If we have to talk about the trade routes from Russia to via this Indian Ocean to the other countries, European, etc., or maybe Southeast Asian countries via this route to again Africa and other parts of the country or the Western nation, then this route is very, very important. So escaping this route is not in the dictionary anymore. Why? Because this is important route, and then we need to have a lot of surveillance in this route because of this. Why? Because when the so much of dependency of the countries are there on this part on the Indian Ocean, then the surveillance has to be increased, and also not only surveillance, the relations with the people have also be needed to be good. तो इंडिया के साथ तो रिलेशन इसलिए ऑटोमेटिकली काफी कंट्रीज की इसलिए भी अच्छे हैं बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं सिंगापुर की, राइट, मलाक्का स्ट्रेट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी ट्रेड रूट, और भी ट्रेड है वहां पे आगे, बट द पॉइंट इज जिस तरह से मलाक्का इज सो वाइड in terms of that the trade, the ships can move through it, and there are other strait also near to that, but the point is वो इतने wide नहीं है, they are not seamless, जिस तरह से शिप वहां से निकल सकता है उस एरिया से नहीं निकल सकता, ठीक है. So that is why the Singapore is more blessed in that way that Malacca Strait is the only option for the ships to pass through that, and maximum trade happens through that area. Therefore people are having good relation with Singapore no matter what. If you talk about USA, if you talk about all the countries, the major countries, आप देखेंगे all of them have maintained a good relation with Singapore. Why? Because their dependency on the Malacca Strait is there, right? If Singapore just turns out to be hostile to you in any way, then your trade will be impacted, your supply chain will be impacted, okay. So similarly it commands sea routes, what this Indian Ocean, right, from all the area, and it is because of this India shares good relation between many countries. और आज से नहीं, ancient time से भी talk about history में भी आपने देखा होगा that we used to transport lot of goods. अगर आप you go back to some of the empires, right, then you will see your Cholas, Cheras and Pandyas, they used to have the good trade with the Sri Lanka, with Cambodia, with Vietnam, with Southeast Asian countries, and we find the traces also of them in different Java, Sumatra. We find the traces of that also in different parts of the country, and also with the Mesopotamia, your Egypt, etc. Now we'll come to the size. What is the size of the country? Write down the heading size. Write down the heading size. Write down India's total area. This is a repetition again, but write down, it's okay. India's total area accounts for 2.4% of the total geographical area of the world. Next point. India has a land boundary of about India has a land boundary of about 15,200 kilometer. 15,200 kilometer. Next point. The total length of the coastline of mainland. The total length of the coastline of mainland. The total length of the coastline of mainland. The total length of the coastline of mainland is 7,516 kilometer. 0.6 actually. 0.6. 7,516.6 kilometer, including Andaman and Nicobar, including Andaman and Nicobar Islands, including Andaman and Nicobar Islands. Full stop. Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Full stop. And Lakshadweep. Next point.
India is bounded by India is bounded by mountains in the northwest. India is bounded by mountains in the northwest, north and northeast. India is bounded by mountains in the northwest, north and northeast. Full stop. South of about 22 degree. South of about 22-degree north latitude, India begins to taper. India begins to taper and extend towards extend towards Indian Ocean and extend towards Indian Ocean, comma, dividing it into two seas. Dividing it into two seas. The Arabian to the west, the Arabian to the west, taper and extends towards Indian Ocean and extends toward Indian Ocean, dividing it into the two seas, the Arabian on the west and Bay of Bengal on the east. Easy to explain this part, right? What is happening after 22? 22-degree north. Now it started to taper. Taper means it's going like this, narrowing, right? And going toward Indian Ocean. अब यहाँ पे क्या है? This whole sea is there. Now because of this landmass, the sea is divided into two parts, right? One is you are having the Arabian Sea on the west side, and on the east you are having Bay of Bengal. The Bay of Bengal. Okay? So this is what they are talking about. Now write down time along the standard meridian of India. Time along the standard meridian of India. 82 degree 30 east. 82 degree 30 east. Passing through Mirzapur. Passing through Mirzapur in Uttar Pradesh. Passing through Mirzapur in Uttar Pradesh. Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time of India. Standard time of India. Right. Now you have to tell me that why India cannot have, we are talking about in India also, like different countries like Russia, like other parts of the nation, we have only one time, right? All that will be followed. But in other parts of the world, this is not the case. The country has to have, they have different time zones, right? Because the geographical area is so big that they cannot afford to have only one time. Like in India, we follow only one time, but there are countries where they do follow 3 or 4 uh, time zones, right? If this is there, then what will happen? What will be the repercussion? क्या हो सकता है इससे? So that is what we need to think, right? अगर आज मैं इंडिया का टाइम जोन 1 से 2 या 3 करना चाहूँ, तो what will be the repercussion on all of that? So you have to think and tell me now. क्या हो जाएगा? क्या हो सकता है? Do you know that in Shillong, for example, in also in Arunachal Pradesh, what happens? Huh? Sun rises first, right? There's a delay of what? Almost 2 hours from Gujarat, right? In Gujarat, it happens after 2 hours later. ठीक है? So अगर इतना ज़्यादा difference है, right? And still we are following the same time zone. So why we should change? For example, someday, for example, in the administration, ने बोला या फिर through law we have changed it, and now we are following the 2 time zones. यहाँ पे different तो यहाँ पे different. So what will happen? क्या होगा उससे? हाँ, सर्विसेज में हमें सर्विसेज करनी पड़ेंगी ना इस तरह से. क्या सर्विसेज इम्पैक्ट होंगी? Online students, yes, Piyush is saying
Ma'am, the time gap is not long enough to have multiple time zones. It would create a confusion. Yes, that is true. That is true. But can you tell me why the different countries are having, because they are having such a geographical space, they have big geographical space, and then they are having different time zones. So okay, so this could be one of the reasons. But there are people who still demand in India, right? Why? Because they say that, see, our wake up, our sun rises at around 4. In Gujarat, it is, for example, rising at 7 almost. So, right, if my sun is rising at 4:30, I want to wind up and I want to start the day like that. So, problem is that जब आपका सारा function start होगा तभी तो आप you cannot work unilaterally. If you're, for example, your sun rises at 4, but you're bound to go to office at 10, तो आपका ये time तो productivity का time तो गया, right? Productivity का time तो आपका गया, because you're still joining at 10. Railways and public services will suffer. Yes, but how the other people then manage in different countries? फिर वो लोग कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, लिटरेसी लेवल नहीं, how they manage it, the things. This is an important topic to study. If you are saying that this is not possible, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर बाहर के लोग कैसे पॉसिबल करते हैं इस चीज को? ये तो फैक्ट आपको पता है ना, डिफरेंट कंट्रीज में दे हैव मल्टीपल टाइम जोन्स. थिंक बताइए, और अगर नहीं पता है तो प्लीज डू एंड गो एंड स्टडी अबाउट दिस टुडे. This is your assignment. Write down your assignment that you have to study about this. I'm giving you 1 week's time. मैं कल नहीं पूछूंगी, but definitely Friday या फिर next week I'll definitely ask about it. Go and search about it. All right. Now we are moving to another topic, which is not topic. I mean, I want to just give the intro only of India with respect to the world. Write down India in the world. It is just a perspective that we are writing. ऐसे कोई अलग से topic नहीं है, right? And we are writing about India only. Write down. The Indian landmass has a central location. The Indian landmass has a central location between East and West Asia. The Indian landmass has a central location between East and West Asia. Full stop. India is the southward extension. India is the southward extension India is the southward extension of the ancient continent. Of the ancient continent. Full stop. The Trans-Indian Ocean. The Trans-Indian Ocean routes. The Trans-Indian Ocean routes connect the countries of Europe. Connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia and the countries of East Asia, full stop. And the countries of East Asia, full stop. No other country has as long a coastline. No other country has, no other country has
as long a coastline on Indian Ocean, on Indian Ocean as India has, as India has, full stop. India's contacts with the world. Just wait. Why you are so sleepy, Rao? What happened? Huh? You're taking lectures since morning? क्या हो गया? आप एक ही क्लास में आइडियली योर क्लास थोड़ा टाइम डिस्कशन में हो जाता है. आइडियली योर क्लास इज ओनली 1 hour 45 minutes. 15 minutes आपका डिस्कशन में हो जाता है. अच्छा, आपका चल रहा है अभी भी क्लासेस? अच्छा, सीसेट कौन ले रहे हैं? अच्छा, आप कर रहे हो अभी? ओके, आई थॉट आपका कोर्स हो चुका है. यू आर कमिंग ओनली फॉर माय क्लास इन द इवनिंग. अच्छा, कितना चल रही है अभी आपकी क्लासेस सुबह से? सुबह से कितने टाइम से आपकी स्टार्टेड? 10:40 to 1:30. इसके बाद फिर ये वाली क्लास. अच्छा, ओके, ठीक है, राइट डाउन. No other country has as long as a coastline on Indian Ocean as India has. Full stop. India's contact with the world have continued. Andar. India's contact. India's contact with the world have continued through the ages. Through the ages. Full stop. The spices, comma, muslin. The spices, comma, muslin, and other merchandise and other merchandise were taken from India were taken from India to different countries. Were taken from India to different countries. Full stop. On other hand, on the other hand, comma, the influence of Greek sculptures. On the other hand, the influence of Greek sculptures, the influence of Greek sculptures, comma, and the architectural style of domes and the architectural types of domes can be seen in different parts of India. Right? So this was just the intro. We have just given a rough intro. We have given the data size, longitudinal extent, latitudinal extent, Indian Ocean presence. This is just an intro that we have done, right? Now we will write in detail about the physical features of India. Write down physical features of India. Physical features of India. Write down. Write down the first point. Physiography of an area. Physiography of an area. Physiography of an area is the outcome of is the outcome of structure, time, and process. It is the outcome of structure, time, and process. What do you understand by this? That it is a with the structure, time, and process. क्या मतलब है इस चीज का?
First of all, from what material this has been made from, right? And how much time, geological time that we talk about, you know that in geological time period anything can change. Fossils change हो जाते हैं आपके कोल में, राइट? योर कार्बन जियोलॉजिकल टाइम पीरियड की वजह से ना, ऐसा तो है नहीं कि प्रोसेस चाहिए उसको एक चेंज होने के लिए, प्रोसेस, so why it is known as structure time and process. So you can give multiple examples इसके अंदर. This has been a statement given by one of the famous scholar which you read in paper 1, but I won't be discussing it right now because it will become more of confusing for you. So it is the outcome of structure time and process. और इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है सिर्फ इतने पार्ट पे. The physiography of an area is the structure time and process. Discuss and explain. Right, but now right now it is not the right time to discuss this thing. But the point is कि कोई भी आपका land area है, it requires time for evolution, for change. So time, geological time की बात करते हैं. It's not we are talking about the time, for example, 100 years or 50 years or 2 years. We are talking about the time of, it's a geological time period. For example, it takes millions of years. When we talk about the formation of carbon, it has taken huge number of years. यहाँ हाँ, बहुत सारे पीरियड्स है, प्री कैम्ब्रियन है, क्रिटेशियस है, क्वाटरनरी है, बहुत सारे पीरियड्स की है कि हम बात करें, वो छोटा टाइम पीरियड नहीं है, वो बहुत टाइम के अंदर आपको चेंज हो रहा है. सो ये इज आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर टाइम एंड प्रोसेस. उसी तरह से इंडिया भी, हाउ इंडिया हैज बीन फॉर्म. सो इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, आई थिंक जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है गोंडवाना एंड लॉरेशिया के बारे में, दिस इज अ राइट टाइम टू डिस्कस. सो व्हाट हैपेंड, अब यहाँ से आप सुनेंगे, दिस इज जस्ट लाइक अ स्टोरी. So we considered that the world was only one landmass. ठीक है, there was a scholar who told that the world was only one landmass. ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में दिख रहे हैं, वो कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, सिर्फ पूरा एक लैंड मास था, विच वी यूज टू कॉल दैट एज पेंजिया, राइट? और उसके साइड में था आपका ओशन, उसको हम बोलते थे क्या, पेंथालासा. ठीक है, पेंथालासा एंड पेंजिया, राइट? Then what happened, because of some changes which has happened in the land mass, it got divided into two parts, and that the division of the part led to formation of now Laurasia and Gondwana. It led to the formation of Laurasia and Gondwana. मतलब ये पूरा अर्थ जो था, landmass जो था, it got divided into two parts, Laurasia and Gondwana. When it divided into Laurasia and Gondwana, now we considered India. इस बार prelims का question है ये. There was a question in Prelims 2025 that Gondwana led to in how many continents? One of the statement is asking this, and then the second statement is also asking relevance to this topic only, something else, and then you have to decide which one is correct. Okay, so now Gondwana ने क्या बोल, मतलब लॉरेशिया एंड गोंडवाना में डिवाइड हुआ. Then the continents which you are having, for example, your North America, then your European country, then your Russia, right? These are the part of your Laurasia. These are the part of your Laurasia. जब आप, you have you taken any map booklet, Black Swan या Oxford? किसी ने लिया है? हाँ, आपने अगर नहीं लिया है, न्यू स्टूडेंट्स प्लीज आप ले लीजिए. ठीक है, नाउ इट्स अ हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट हैविंग द लुक एट द मैप्स. ठीक है, ब्लैक स्वन का ले लीजिए या फिर ऑक्सफोर्ड का, जिसका भी आपको सही लगे. रीजनल लेना है, रीजनल भी ले सकते हैं अलग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो लॉरेशिया एंड गोंडवाना, इंडिया को हम किस पार्ट में काउंट करेंगे? गोंडवाना में. ठीक है, बिकॉज सर्दर्न जो साउथ में आया वो क्या था आपका? गोंडवाना. लेकिन इंडिया ऐसे बना बनाया नहीं था. इट हैज बीन फॉर्म्ड विद द स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम. यही फर्स्ट लाइन आपको बताने का कोशिश कर रहा है, दैट this has not, because I know the history, so I'm telling you why they have said this. It has taken lot and lot ages for the formation. So it divided into Gondwana में क्या क्या divide हुआ? Your South America, Africa and Australia, then हाँ, your Indian Australian plate, Africa, South America, Antarctica, right? They all divided into this.
So Africa being a part of Gondwana, Africa was the part of Gondwana, right? And India was not here where you can see right now. जो आपको लैटिट्यूडल लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट दिख रहे हैं और इंडिया के वो ऐसे नहीं थे. There is a theory that India was near to your Africa. और जब वो प्रोसेस बहुत सारी चेंजेस हुए, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द थ्योरी सेज दैट बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक शिफ्ट्स which happened. Tectonical shift मतलब टेक्टोनिकली मूवमेंट्स, जो आपकी प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड. प्लेट आपका इंच बाय इंच आपका नॉर्थ वर्ड्स जा रहा है और अभी भी आज भी जा रहा है, राइट. व्हेन यू सी द लेंथ ऑफ द हिमालयस व्हिच इज इंक्रीजिंग, जो थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है, ठीक है. सो दे सेड दैट इन दिस got divided from here, this peninsula got divided from here and in the move northward. और नॉर्थवर्ड आके जो आज आपका पोजीशन है इंडिया का, वो तब जाके वैसा हुआ है. मतलब इंडिया पहले यहाँ नहीं था, इंडिया वाज नियर व्हाट, साउथ अफ्रीका, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक शिफ्ट, जो आपका शिफ्ट हुआ है, मूवमेंट ऑफ द लैंड मास हैज हैपेंड, और फिर वो अब कहाँ पर है, जहाँ पे आज आपको दिख रहा है, और आज भी इट इज मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है. कितने लोगों को ये बात समझ में आई है, प्लीज टेल, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स. मैं एक बार और रिपीट कर दूंगी अगर आपको समझ नहीं आया. दीपाली, आपको आया? ईशान, क्लियर? ओके, गुड, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट हैपन and it moved, and this is again by the structure, process and time. Because of these factors, it is a concept of structure, process and time. देखिए, the land of India exhibits great physical variation. The land of India exhibits great physical variations, full stop. Indian landmass was a part of Indian landmass was a part of Great Pangaea. Indian landmass was a part of Great Pangea, Pangea. There's one more A. Pangea. Great Pangea. ब्रैकेट में लिखेंगे Pangea means entire land mass. It means entire land mass, which broke into two parts. सेम चीज बता रहे हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है. It broke into two parts. It broke into two parts in the Carboniferous period. In the Carboniferous period, it divided into two parts in the Carboniferous period. Carboniferous period. In the Carboniferous period, due to the force of gravity, due to the force of gravity and buoyancy. This is one of the theory which was put by one of the scientists. It got divided because of the gravity and buoyancy factor. Buoyancy factor. Full stop. The northern and the southern parts, the northern and the southern parts were divided into Laurasia. The northern and the southern parts were divided into Laurasia and Gondwana land. Spelling is Laurasia, it is written here. For Gondwana land, you can see Gonda. Gond, write down Gond, then write down Wana and land. Gondwana land.
respectively, leaving Tethys Sea. This sea, this is Tethys. This is the position of Tethys Sea. दो landmass के बीच में we had a Tethys Sea, leaving Tethys Sea in between, in the middle. Leaving Tethys Sea in the middle. Next point. Based on these macro variations, based on these macro variation, ये points आपके important है, please underline. ये macro, जहाँ पे मैं आपको ऐसे words लिखवा रही हूँ, macro, it is important. Because of this macro variation, India can be divided into the following physiographic division. India can be divided into following physiographic divisions. पहला है आपका, write on the first one, northern and northeastern mountains. So you got your first division, which you call it as northern and northeastern mountains. Northern and northeastern mountains. Second लिखेंगे, write on the second, northern plains. It is just like second is your northern plains. Third is your the Peninsula Plateau. The Peninsula Plateau. Fourth is your Indian desert. The Indian desert. Fifth is your coastal plains. And then last, islands. Last slide, your islands, right? So these are your 6 physiographic features. Please have a reading of this. This is important for the prelims also. You should know all the physiographic features. देखिए prelims के लिए बहुत important है कि आप ये जो points मैं आपको लिखवा रही हूँ, you start learning it there only, because कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो जैसे आपका गोंडवाना लैंड एक्सेट्रा इस बार आया है आपकी प्रीलिम्स में, which was not expected but it has come. So from the lectures also you can get lot of help just by listening it carefully. ठीक है, सो पहले है आपका नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, दूसरा है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, then there is a peninsula plateau, then there is the Indian desert, then there is a coastal plain and the island. जो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स कौन से पीरियड में बने हैं, वी विल हैव अ डिस्कशन ऑफ दैट ऑल्सो, कि आपका अगर हम बात करें ग्रेट हिमालयाज की, राइट, so they have been formed in a different period, right? डिफरेंट पीरियड में बने हैं आपके शिवालिक्स, आपके डिफरेंट पीरियड में बने हैं, मिडिल हिमालयस आपके डिफरेंट पीरियड में बने हैं, ठीक है। और आपका जो प्लेन्स है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स कौन से पीरियड में बने हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, हाँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन समबडी आंसर दिस क्वेश्चन? हाँ, जो हिमालय से वो आपकी टर्शरी पीरियड में बने हैं, ठीक है। जो हिमालय से वो आपके किस कौन से पीरियड में बने, टर्शरी। और टर्शरी में भी 3 टाइप्स हैं आपके, इओसीन, मियोसीन एंड प्लियोसीन, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर आपका पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू आपका पहले से ही बना हुआ था, क्यों बना हुआ था, बिकॉज यहाँ से जब वो टूटा तो पेनिनसुला ऑलरेडी बना हुआ था, ये बाद में बने थे, ठीक है, क्या, हिमालयस। देन योर इंडियन डेजर्ट, योर कोस्टल प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड इन
हाँ, वो बात लावा, हाँ, लावा वगैरह, करेक्ट। ठीक है, सो वी शुड नॉट गेट इनटू डिटेल ऑफ टाइम पीरियड, वरना आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ये भी एक पार्ट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। नाउ प्लीज read out this clearly, that how many types it has been divided into, everyone online students clearly आप read करिए and let me know about this. कोई भी पीवाई क्यू आपका रहना नहीं चाहिए इंडियन ज्योग्राफी में। असाइनमेंट जो मैं आपको दूं डेली बेसिस पे, यू हैव टू डू इट। अपने आंसर्स को चेक, ओहो स्थापना, योर्स दिस आंसर टेस्ट पेपर स्टिल लाइंग विद मी, ठीक है। बाय ट्यूसडे आई सेड इट टू यू ना स्थापना। ध्रुव इज नॉट देयर टुडे, व्हाट हैपेंड? उनका भी टेस्ट पेपर नहीं आया मेरे पास। ठीक है, अभी आप पेपर 2 में प्लीज लेट बैक एटीट्यूड मत दिखाना। ऑल द स्टूडेंट्स और न्यू स्टूडेंट्स स्पेशली, आप लोग जितना भी आपको असाइनमेंट दिया जाए उसी दिन आपको कंप्लीट करना है ऑल द पीवाईक्यू, एंड यू हैव टू डिस्कस। और आपको अगर ऑनलाइन स्टूडेंट है तो यू कैन डिस्कस इन द क्लास ओनली कि मैम वी वर नॉट एबल टू राइट, हाउ वी हैव टू राइट द कंक्लूजन। लॉट ऑफ पीपल कम टू मी फॉर द कंक्लूजन समझ में नहीं आ रहा। यस राहुल, दैट इज वन ऑफ द थिंग that they come to me कि that conclusion we are not able to write, या फिर ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप लोग पूछेंगे मुझसे, ठीक है। ओके, डन। shall we move forward? Write down geologically, geologically, next point में लिखिए geologically, comma, the Himalayan mountains, geologically the Himalayan mountains represent a very youthful topography. Himalayan mountains represent a very youthful topography, a very youthful topography with high peaks, with high peaks, comma, deep valley and fast moving rivers, and fast moving rivers. Write down, Himalayas were formed in, Himalayas were formed in Tertiary period. Himalayas were formed in Tertiary period. Full stop. The Himalayas and northern plains, the Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. Full stop. The Peninsular Plateau constitute, the Peninsular Plateau constitute one of the most ancient land masses, one of the most ancient land masses. The Peninsular Plateau constitute of one of the most ancient land masses and most stable land blocks, and most stable land blocks on the earth's surface. अब आप मुझे ये बताइए that why they have considered the landform of landmass of Peninsular Plateau as more stable versus your Himalayas. Himalayas को क्या बताया? टेक्टोनिकली एक्टिव.
क्यों बताया है हिमालयस को टेक्टोनिकली एक्टिव वर्सेस योर पेनिनसुला स्टेबल। और मैंने ये भी बोला था दैट दे हैव बीन ऑलरेडी फॉर्म्ड हियर, यहाँ पे इनका बेस यहीं पे बना हुआ था पेनिनसुलर लैंडफॉर्म्स का। जब वो यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे उसके बाद आपके कुछ चेंजेस हुए, बट पहले से ही बना हुआ था। ठीक है, सो लैंडफॉर्म्स क्यों है बताइए? एक टेक्टोनिकली एक्टिव क्यों है, एक टेक्टोनिकली इनएक्टिव क्यों है? स्टेबल, टेक्टोनिकली स्टेबल। Peninsulas are very very stable. They are said to be stable. Why? Because sharpness are still growing. Plateaus, you should think plateaus are far from the convergent plane boundary. Yes, good. Yes, that is one of the reason where you can say that जो आपका see, I should explain this part like this. देखिए, this is your Eurasian plate, right? And this was your Africa here. This is your Africa, and here was your India. ठीक है, now India got separated from here and started shifting like this. Now you consider this India like this. Suppose it has come here, now it is moving northward. अब जब ये northward आया and what happened, that so a lot of people must have not done that plate boundary में जब आपका convergence होता है, so this formation of Himalayas happened here. ठीक है, formation of Himalayas happened here. Now this basically your this is lying your India and this Eurasian plate. This is your Indian plate and this is your ऊपर वाला Eurasian plate. So basically your Eurasian and Indian plates are colliding, right? They are converging. So we are on from this point of view, from here, right? If you consider this zone only, then this is very tectonically active, because once a plate will move, the chances of the instability are more, right? When the plates will move, what will happen? The chances of earthquakes are there, volcano, no, अब यहाँ तो नहीं एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ कैसे हो जाएगा? You need to have that also ना for that. ठीक है, volcano not earthquakes, possibility of earthquakes are there. ठीक है, and instability are there, landslides उसका कुछ उसका consequence हो सकता है. ठीक है, so this will always be happening here. Why? Because it is formed at the boundary of two plates. जब दो plates attached हैं, so what will happen? There can be there will be more movement, right? अब ये पता नहीं कि कब आएगा, कब movement होगा, क्या होगा, which is very unpredictable thing, because since the scientists are going through this phenomena. But the point is, अभी आपको दिख रहा है कि this is on the one plate only. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि दो प्लेट ज्वाइन करके मिला के बना रहे हैं. But here Eurasian plates and Indian plates are involved. And if two plates are involved, then what will happen? They are bound to be more tectonically unstable. Or tectonically unstable, that means the chances of the disasters are more in this, and therefore all the northern areas, right, these all, जब भी आपका एपिसेंटर कभी भी अर्थक्वेक आता है, कहाँ पे होता है? या तो अफगानिस्तान में होता है, या फिर आपका नेपाल में होता है, या फिर कहीं दूर हो इधर पाकिस्तान में होता है, या फिर इंडिया में होता है, राइट? इंडिया में भी नॉर्दर्न प्लेन्स की, नॉर्दर्न साइड की मैं बात कर रही हूँ, that you will always have this thing. Why? Because we all know that this is tectonically very active. ठीक है, and also one more thing, that this also comes in your very danger zone. There are 5 zones, right, of the like zone 5, zone 4, etc. तो ये किस में आएगा? हमेशा टेक्टोनिकली कैसा है? एक्टिव है. ठीक है, सबडक्शन जोन नहीं, सबडक्शन जोन यहाँ पे नहीं है. सबडक्शन जोन वहां पे होगा जहाँ पे आपका, नहीं जरूरी नहीं है. सबडक्शन जोन आपका कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच में भी हो सकता है. ठीक है, जब आपका सबडक्ट हो रहा है, सबडक्शन कैसे होगा? जब आपका ओशन है, ओशन प्लेट जो भी है आपकी, ओशन प्लेट ज्यादा डेंस है तो नीचे जाएगी, और यहाँ पे कॉन्टिनेंट है तो वहां पे क्या बनेगा? सबडक्शन बनेगा. ठीक है, योर ट्रेंचेस आर अ पार्ट ऑफ इट.
जो ट्रेंचेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इसी तरह से बनते हैं सबडक्शन वाले में, पर उसमें एक ओशन प्लेट इन्वॉल्व होती है और दूसरी आपकी कॉन्टिनेंट। यहाँ पे दोनों ही कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है। अब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है, जब कोलाइड करेंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगी, पुश करेंगी। पुश करेंगी तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, माउंटेन्स है, एंड देयरफॉर वी हैव अ रेंज ऑफ माउंटेन हियर। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट दिस? मैम पेनिनसुलर प्लेटू आर ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्लेट बाय हिमालय। हाँ, इंटीरियर पार्ट मतलब कि एक ही इंडियन प्लेट पे है ना, इंडियो ऐसे भी एक ही प्लेट है, यहाँ पे दो, दे आर हिंजिंग ऑन द टू प्लेट्स, दैट इज द थिंग। नहीं, सारे हिमालय सेडिमेंट्री रॉक्स के नहीं बने हुए हैं। हिमालयस आर मेड अप ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। सिर्फ आपके शिवालिक्स बने हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है दैट वन नीड्स टू हैव, दैट हिमालयस आर मेड अप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अगर टोटली आप बात करो, हिमालय से मेड अप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, अगर हिमालयस को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे वो ग्रेट हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक्स। ये शिवालिक्स आर द न्यूएस्ट फॉर्म, क्योंकि सबसे पहले क्या बने आपके, योर ट्रांस हिमालयस, फिर आपके ग्रेटर हिमालयस, देन आपका मिडिल हिमालयस, और फिर आपका शिवालिक्स, जो आपका क्या है, आउटर हिमालय। जो आपको जो शिवालिक है वो आपका सेडिमेंट्री है, but your upper one is your metamorphic. So greater Himalayas etc. they are all made up of the metamorphic rocks. तभी तो आपको क्या मिलता है वहां पे, you get the anthracite etc. कोल मिलता है आपको, ठीक है, वहां पे मिलता है ना, क्यों, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो मेटामॉर्फिक में क्या होगा, हाई टेम्परेचर प्रेशर, तो क्या मिलेगा, मतलब ज्यादा बेटर क्वालिटी का कोल मिलने के चांसेस है। ऐसी बात नहीं है वहां पे सेडिमेंट्री में आपको नहीं मिलेगा, बट चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर फॉर्म ऑफ कोल इज हाई इन योर हिमालयस। ठीक है, नेक्स्ट इज योर राइट डाउन। कहां तक लिखा आपने, राइट डाउन, हाँ। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ alluvial deposits. The northern plains are formed of alluvial deposits and peninsular plateau. And peninsular plateau is composed of, and peninsular plateau is composed of igneous, igneous and metamorphic rocks, igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. People who have not done the rocks do not have to worry. सिर्फ आप लिख लीजिए अभी एज एन इंफॉर्मेशन, जब हम रॉक्स और सॉइल पे आएंगे देन वी विल हैव अ डिस्कशन ऑफ दिस। ठीक है, gently rising hills and wide valleys. What is the difference between plateau and plains? हाँ, they are the raised table form, right? There is raised table land, much higher than the sea level, right? Rather the plains are more at the level of near to the sea level, and Himalayas and etc. They are way higher than the sea level. ठीक है, next is your next point. Gondwana further broke up. Gondwana further broke up. Gondwana further broke up into the peninsular India, comma Madagascar, into peninsular India, comma Madagascar, comma Australia, comma Antarctica in the Jurassic period. In the Jurassic period. Next point. Peninsular part of the Gondwana land. Peninsular part of the Gondwana land formed from
The igneous rock formed from the igneous rock of Archean, Archean, of Archean, which are transformed into which are transformed into gneiss and schist. Gneiss and schist. Okay, this is the spelling. See, इसको इतना हैवी लेने की जरूरत नहीं है सेंटेंस को, राइट? जब हम रॉक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, तो रॉक का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए टाइम वी गो टू दिस पीरियड Archean gneiss and schist. What is that? Your Archean period, जब ये रॉक्स बने थे, ठीक है. अब ये Archean period आपके टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. वन इज योर gneiss, Archean gneiss, and Archean this your schist, ठीक है. इतना ज्यादा इसको हेविली लेने की जरूरत नहीं है. इसके बाद फिर ड्रेविडियन आता है आपका. ड्रेविडियन में भी टू पार्ट्स आते हैं, राइट? योर दिस वन Dhavar and etc. So you don't have to go too much into a detail of this. बस आप इतना याद कर लीजिए because ज्यादा रॉक स्ट्रक्चर पूछा भी नहीं जाता है और this is more of like confusing you rather than helping you out in understanding of the concept. ठीक है? Okay. So would you like to do a question or I should move further? या फिर लास्ट में आप क्वेश्चन करना चाहते हैं at the end? Whatever you say. करना पड़ेगा क्वेश्चन, लेकिन पहले करें या बाद में करें? हाँ, बाद में करना है, ठीक है. नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस लिखिए. इसमें कोई डाउट है तो पूछिए. ठीक है, आरके नीस एंड शिस्ट लिख लिया आपने? कोई डाउट है तो पूछिए. यू हैव डन अ लॉट बिकॉज फ्रॉम 1.5 hour वी हैव बीन जस्ट रीडिंग न्यू स्टफ. एक बार रिवाइज करके विल जस्ट लेट मी नो. होंगे बीच बीच पे, इतने ज्यादा नहीं है लेकिन. मैप, हाँ तो वो तो करना पड़ेगा ना, तो करना ही पड़ेगा. उसको कैसे आप छोड़ सकते हैं? कैसे करना है? एक आप सेपरेट बुक ले लीजिए. काम मैं व्हाट आई सजेस्ट बिकॉज आई थिंक ब्लैक स्वाइन या ऑक्सफोर्ड में ना बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है. अलग से लेंगे ना तो फिर माइंस का और इसका अलग अलग मैप होंगे बड़े बड़े एंड उसमें आपका मेंशन भी होगा. तो वर्ल्ड के साथ साथ एक रीजनल वाला भी ले लो और उसको ध्यान से स्टार्ट रीडिंग कि अच्छा इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, यहाँ पे ये पॉइंट है. देन स्टार्ट ड्रॉइंग इट ऑल्सो. ठीक है, आप खुद ब खुद बाय लुकिंग एट द मैप यू विल स्टार्ट. उसको अंदर आपको नहीं बनाने, स्टेट्स नहीं बनाने हैं, बस हल्का सा आपको लोकेशन देना है. यू हैव टू ड्रॉ फिजिकल नॉट पॉलिटिकल.
पॉलिटिकल में तो टाइम ही लग जाएगा, वो तो पॉइंट ही नहीं है ना। 7-8 मिनट्स में आपको एक आंसर लिखना होता है, पॉसिबल नहीं है। तो आप बस डायरेक्शन देख लो कि अच्छा, फिर आपको माइंड से भी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उसी जगह पे ही बनाना है, बस आपको रफ आइडिया देना है, दिस इज द स्टेट वेयर आई एम ड्रॉइंग द पर्टिकुलर माइंड, और फिर आप उसको ड्रॉ करके मार्क कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन वहां पे लिख सकते हो। क्लियर होगा वहां पे, अगर रीजनल वाला लोगे ना कोई, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी का मैप का कोई एटलस लोगे तो वो क्लियर होगा, डेडिकेटेड होगा तो क्लियर भी होगा, थोड़ा बड़ा भी होगा, पॉच पॉच नहीं होगा उसके अंदर, ये ज्यादा बेनिफिट रहता है। ठीक है, और हर क्वेश्चन के अंदर कोशिश करिए मैप बनाने की। अगर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है तो, अननेसेसरी वाला मत बनाना कि वहां पे रिक्वायर्ड ही नहीं था बनाना। माइंस पूछा है, रिवर्स पूछा है, या लोकेशन के बारे में कुछ बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, तो वहां पे आपको यू कैन ड्रॉ द मैप्स। हाँ, फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं। अब इतना सब कुछ आप स्ट्रेस ले लोगे ना कि फ्लो चार्ट भी सीखना है, भी सीखना है, तो प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट क्या है? कुछ भी नहीं है, आपको बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है जो आप सेंटेंस में नहीं देना चाह रहे हैं, right? So you want to give that information in through flowchart. It is just a way of communicating the things which you can't include in the answers. Regular answers में आपने कुछ जैसे लिखा, अब आपको फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपका आंसर एक्सीड कर रहा है, अब आपको ये भी फील हो रहा है कि आई हैव टू राइट द डीमेरिट्स ऑल्सो, आपको अचानक से लगा कि आई शुड राइट डीमेरिट्स, उसके बिना वो लग रहा है, तो क्या करोगे? डीमेरिट्स लिख के यू स्टार्ट राइटिंग फटाफट like this, 1.2 point 3 point। अब इस पे you're not including the full sentences, क्योंकि full sentences का टाइम भी नहीं है आपके पास, right? I have one of the paper of one of the aspirant who has cleared this, she has also written memes, ठीक है, so I'll show her paper to you, किस तरह से उन्होंने, she used to make lot of beautiful charts, इस तरह से राइट, फ्लो चार्ट्स बनाते थे वो, एंड उनका ऐसा भी नहीं लगता था कि वर्ड लिमिट को कम करने के लिए फ्लो चार्ट बना रहे हैं, कभी कभी आप ऐसे भी, बिकॉज व्हाट दे स्टूडेंट्स डू कि अगर आपका वर्ड लिमिट ना लिखना पड़े, इतना वर्ड्स ना लिखना पड़े, दे मेक फ्लो चार्ट्स, तो उससे वो भी उनके आंसर्स इतने ब्यूटीफुली डिजाइन होते थे कि वो भी नहीं लगता था, right? So sentences she used to write in points, and then she used to make flowcharts in a way that वो assimilate हो जाता था answers के अंदर। So I'll show her copy, I must be having, I must have taken a photo state or something, so आप एक बार उसको रेफर कर सकते हैं कि flowcharts कैसे बनाने हैं। ऐसे बना दिया कभी पॉइंट्स एक्स्ट्रा, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं, एग्जाम्पल्स 2, एग्जाम्पल 1 दे दिया इसके थ्रू, इससे क्या लगता है कि आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो बट यू डोंट हैव टू मच ऑफ टाइम, विच इज वेरी ऑब्वियस ऑल्सो, कितना लिख लेंगे आप 7-8 मिनट्स में, तो आप इस तरह से यू कैन सपोर्ट योर आंसर्स लाइक दैट। चले आगे बढ़े, write down about northern mountain ranges, 10 minutes more, and then at 5:50 I'll give you the answer question, right? And you will have 8 minutes to write. Write down first northern mountain ranges. Write down northern mountain ranges. Write down Himalayas stretching over the northern boundaries of India. Himalayas stretching over the northern boundaries of India. Himalayas stretching over the northern boundaries of India are geologically young, are geologically young and structurally fold mountain ranges, and structurally fold mountain ranges of the world, of the world. Full stop. The formation of Himalayas
The formation of Himalayas took place. The formation of Himalayas took place due to the collision of Indian and Eurasian plane. It happened due to the collision of Indian and Eurasian plate. Right on next point. Himalayas extending from the Indus Gorge in the West Brahmaputra, in the Indus Gorge, West Brahmaputra, in the Himalayas extending from Indus Gorge in the west, comma डालिए, Brahmaputra Gorge in the east, and Brahmaputra Gorge in the east terminates suddenly, taking sharp southward bend. Southward bend. We call them as syntaxial bend. We call them as syntaxial bend. देखिए, you are having two bends actually. ठीक है, एक आपका रहेगा कहाँ पे, नियर नंगा पर्वत, राइट, एंड वन इज योर नियर अरुणाचल प्रदेश, दिस वन. ठीक है, सो एक सिंटेक्सियल बेंट आपका यहाँ है और दूसरा सिंटेक्सियल बेंट आपका यहाँ है. नाउ दिस सिंटेक्सियल बेंट हैज बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ व्हाट? When the Indian plate was moving, they were shifting towards the northward, right? So the plate was there above, right? So what happened because of the collision, right? Now we had two bends, one is this and another one is this. One at the Nanga Parvat, we have the syntaxial bend here, and the other bend we have at is here, far in the east, right? So therefore what happens, even your Brahmaputra takes a bend like this. The Brahmaputra river takes a bend like this here. Okay, so syntaxial bend of the Himalayas, हाँ, syntaxial bend की तक ही लिखना है, of the Himalayas. Before that, these bends are called syntaxial bends of the Himalayas. Syntaxial bends of the Himalayas. Next is your trans slash Tibetan Himalayas. Trans Himalayas slash Tibetan Himalayas. See, now we will be dividing into three parts. You all know that the Himalayas are divided into three parts, right? So one is your 3 parts and plus 4. This is your Trans Himalayas. Then is your Greater Himalayas. Then there is your Middle Himalayas, and then your Shivaliks, right? So one is your Trans. So this one is your Trans Himalayas. Then this is your Great Himalayas. Or you also call them as Himadri. Then you have your Middle Himalayas. You also call them as Lesser Himalayas. The next one we have is Outer Himalayas. We also call them as Shivaliks. Okay. So this is how they have been divided.
Now what we will do, we will try to understand all of these Himalayas separately, trans alag se, then great, then middle, then outer, right? Because see, इनका formation एक साथ नहीं हुआ है. One needs to understand that greater Himalayas have been formed first, then middle Himalayas, then outer Himalayas. अगर आप range भी देखेंगे, height देखेंगे तीनों Himalayas की, then range of great Himalayas is more. Where is your Mount Everest? It is a part of Great Himalayas, right? So it is a part of Great Himalayas. If you see the range, it is 6,000 meters. Then your Middle Himalayas, then it is lesser than your 6,000 meter, right? Great Himalayas, Middle Himalayas, and then outer. Outer is your 900 to 1100 meters. ठीक है? So अगर ये आपका range है, so that means आपके range क्यों differ कर रहे हैं? Because this has been formed first, this has been formed later, this has been formed न्यू, दिस इज द न्यूएस्ट वन. ठीक है? वैसे तो ये पूरा ही आपका किसमें बना है? टर्शियरी पीरियड में. बट द पॉइंट इज, अगर हम डिफरेंट एजेस की बात करें तो ग्रेट हैज बीन फॉर्म देन दिस. सो इस तरह से हमें भी डिस्कस करना है इनकी स्पेशलिटी, इनके करेक्टरिस्टिक्स. ग्रेट हिमालयस के क्या है, वहाँ पे कौन सा है, क्या क्या आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्सेट्रा. ठीक है? दैट वी विल डू टुमारो, नॉट टुडे. सो फर्स्ट लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन which can be asked with respect to it. Okay, write down the question that we have discussed today. See, बहुत सारा आपका इंटरनेशनल रिलेशन का भी आपका इंफॉर्मेशन इसमें रिक्वायर्ड होगा. ठीक है? ऐसा नहीं, हम साइलोस में नहीं कर सकते टॉपिक्स, बिकॉज खुद सिलेबस के अंदर आपका एक टॉपिक है पूरा, विच इज योर political aspects, and in which you have to talk about cross border terrorism, India's role in world affair, geopolitics of South Asia, Indian Ocean realm, your regional consciousness and interstate issue, emergence of new states, and this all. ठीक है? So ये सब कुछ आपको इंडियन आईआर के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा देखना पड़ेगा. ठीक है? आई एम नॉट सेइंग फुल्ली, बट देन यू हैव टू लुक इनटू इट. क्वेश्चन लिखेंगे आप. डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन. डिस्कस the implication of India's strategic location. India's strategic location with reference to Indian Oceans. With reference to Indian Oceans. क्या क्या आप इसमें ऐड कर सकते हैं? How will you start the answer? पहले आप ये इंट्रो में बताएंगे कि किस तरह से हाउ इंडिया हैज टेकन द इम्पोर्टेंट पोजीशन इंडियन ओशन, राइट, एंड व्हाई इट इज स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट. पहले इंट्रो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि
इंट्रो में आप स्ट्रेटेजिकली के बारे में, या फिर यू कैन यूज एनी स्कॉलर who has said something about Indian Ocean. Yes, that is a good way to start any answer, right? That is a very good way of starting any answer. Then you can give a data. For example, if you try to give a data of that why Indian Ocean is important. For example, you can quote any line or any one. For example, important institution has emphasized the importance of Indian Oceans, and you can quote them according to this institution. Indian Ocean is important and lies at the main point, lies at the central point. Okay? Then you have to write that India is a zone of peace, free from superpower rivalry, and increasing cooperation among littoral countries in the region has always been India's foreign policy goal. For एग्जाम्पल लुक ईस्ट पॉलिसी, देखिए ये सब आपको लुक ईस्ट पॉलिसी वगैरह आईआर का पार्ट है, बिकॉज जब आप आईआर भी कर लेंगे तो आप ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन आईआर के साथ मर्ज कर सकते हैं, पर अभी आई थिंक लुक ईस्ट पॉलिसी वगैरह शायद आप ना लिख पाए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट डन आईआर? आपने नहीं किया आईआर? किसने नहीं किया? ईशान, हैव यू डन आईआर? Ma'am. यस या नो? आई डिडंट गेट इट ईशान. No, ma'am. नो हाँ, तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे उस पर्सपेक्टिव से, लोकिस्ट एक्सेट्रा. ठीक है, तो आप ज्योग्राफी की पर्सपेक्टिव से लिखिए. ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं जब आपका आईआर हो जाएगा. तो या फिर आप ये लिख सकते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से तो एटलीस्ट आप लिख सकते हैं. ठीक है, ट्रेड की पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है एरिया, एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स तो लिख ही सकते हैं, राइट? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज. अगर आप आईआर के पर्सपेक्टिव कुछ पॉइंट्स नहीं ऐड कर पा रहे हैं, इट्स ओके. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड, राइट? देन you can talk about in Indian Ocean. Now we have started doing lot of projects also. What project I'm talking about? It's a Great Nicobar project. Am I right? Right. So you can give the example Great Nicobar project. अब now you will ask, मैम आपने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बताया ही नहीं क्लास में और आपने एग्जाम्पल में दे दिया, राइट? कुछ चीजें आपको खुद भी करनी होंगी, विच इज योर करंट. आई कैन गिव यू द डायरेक्शन कि ये इसमें आप यूज कर सकते हो. ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में अगर बता दें दिस इज पार्ट ऑफ द करंट अफेयर पूरा, ठीक है, तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा पूरा. ठीक है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको रफली बताऊंगी, बट आई विल नॉट मेक यू राइट अबाउट. इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट, इट्स अ 72,000 मेगा प्रोजेक्ट इन invested India, which is India is aiming, right, in Nicobar Islands, right? It is for what? It is for the not no. It's basically we want to make a, it's a project where we want to invest in for the infrastructure purposes, right? Obviously we will take care of the marine biodiversity also there, right? Because the clearance has to come from the environment, and environmental impact assessment जो है वहाँ उन्होंने clearance दे दिया था पहले, but the point is people are raising lot of concerns there, especially the tribal people. वो बहुत ज्यादा concerns है उनको that why the this has been used, क्योंकि trees cut होंगे इस project के लिए. So ये जो मेगा प्रोजेक्ट है इंडिया, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, एंड यू कैन राइट दिस प्रोजेक्ट आल्सो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन ओशन, राइट? विद रिस्पेक्ट टू दैट, क्यों? बिकॉज वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ प्रेजेंस, वहां पे नहीं है हमारा. ठीक है, हाँ हाँ, मेटालिक वो क्रिटिकल मिनरल्स में आ जाएगा आपका, मेटालिक नोड्यूल्स एक्सेट्रा. ठीक है, हाँ वो फिर आईआर में होगा, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रही अभी. हाँ ठीक है, ओके. नाउ नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नो कमर्शियल ग्रोथ. अब क्योंकि नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नो कमर्शियल ग्रोथ है यहाँ पे, तो दिस वी आर एमिंग एट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट विच इज गोइंग टू हेल्प अस इन सम काइंड ऑफ एडवांसमेंट इन द एरिया. हाँ ठीक है, सो यू कैन राइट द आंसर. आई हैव गिवन यू द कीवर्ड्स, किस तरह से लिखना है.
How many of you can get it? How you have to write the answer in this question? कितने लोगों को समझ में आया? नहीं आया तो I will repeat. Online, especially your answers are important. आपको आया दीपाली? राहुल? आपको? ठीक है? You tell me. Okay. Piyush is saying yes. Ishan, can you get some idea? Okay. So do write the answer tomorrow. यस तनिष्का प्लीज. तनिष्का अगर आपने आईआर कर लिया तो आप कुछ वैल्यू पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. ईशान जब आप आईआर पढ़ेंगे तो कुछ चीजें पढ़ेंगे उसके अंदर विच इज यू कॉल इट एज कंटेनमेंट ऑफ चाइना. इवन दिवाली यू ऑल्सो containing the China, it is important because we want to keep a check on the exponentialist policy of China जो extend कर रहे हैं, and we have to also contain them. It's a good way of surveillance also. Apart from that, we are looking forward for the look east policy. In that way also it is very very critical that if these projects will be made and our presence will be more in the Indian Ocean. So इस perspective से ये बहुत important है. ठीक है. And then there is a Indian rim ocean. ठीक है. ये सारी चीजें आप एक बार साइड में लिख सकते हैं. जब आप आईआर में ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो फिर आप ये कनेक्ट कर पाएंगे what I was telling you in the class. ठीक है. I'm not telling you to go and search about all of that, बट एक बार एटलीस्ट आपको माइंड में रहेगा कि हाँ इस पर्सपेक्टिव से भी हम कभी लिख पाएंगे. एक आप इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी ऐड कर सकते हैं. देखिए आंसर्स को जब आप लिखेंगे तो एक तो आप इस तरह से भी डिवाइड करेंगे. वन इज फ्रॉम सिक्योरिटी पर्पस बिकॉज यही आपका आईआर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद आपका यू कैन राइट डाउन फ्रॉम द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस that why this area is important. One is your trade, your critical minerals, etc., exploration, right? Then your conservation of marine biodiversity because वो भी आपको कंजर्व करना है because marine biodiversity वगैरह के बिना आप नहीं. this is important for the conservation क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार में आपका क्या है? there is a coral this thing कोरल रीफ्स एक्सेट्रा. ठीक है. सो गल्फ ऑफ मन्नार में है आपका. कहाँ पर है? उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर है. इंडिया की बात हो रही है. इंडियन ओशंस. ठीक है. सो फॉर द कंजर्वेशन ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एनवायरमेंट के पर्पज से भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से आप स्लैब्स डिवाइड कर सकते हैं. ये हेडिंग्स हो जाएंगी आपकी, राइट. और हेडिंग्स जब आप लिखेंगे तो वो ज्यादा क्लियर लगता है आंसर. ये हेडिंग है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, सिक्योरिटी, then your political aspect, then your this thing, your biodiversity conservation, marine and biodiversity conservation पूरा. so ecosystem को protect करने के लिए. so आपका जब different slabs होगे तो answers बहुत crisp लगते हैं. ऐसा नहीं होता कि आपके answers mix हो रहे हैं. ठीक है. then you can write small example. जब ये example आएगा तो you can write the example of Great Nicobar project. मैंने आपको example दे दिया. अभी क्या है Great Nicobar project ये आपको अभी घर पे जाके इसका full detail लेना है which is your पार्ट ऑफ द करंट अफेयर. तभी मैंने आपको कहा था करंट अफेयर्स पे सर्च करना इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. अंडमान. यस पीयूष. हाँ जीएस आंसर इसमें. हाँ हाँ इसमें थोड़ा सा ऐसा है क्योंकि ओवरलैप बहुत ज्यादा है. आपका पूरा इंडियन ज्योग्राफी पूरा रिवाइज होगा आपका. टोटली योर इंडियन ज्योग्राफी विल रिवाइज थ्रू द पेपर 2. आपको इट्स जस्ट लाइक पीपल हु आर गिविंग प्रीलिम्स दिस टाइम इट विल बी मोर ऑफ लाइक कि आपको अगर आप सोच रहे थे इंडियन ज्योग्राफी रिवाइज करने का एंड इफ यू हैव ज्योग्राफी एज योर ऑप्शनल देन इट्स योर रिवीजन ओनली गोइंग थ्रू माय क्लासेस. ठीक है. डन. आई होप इट्स क्लियर. थैंक यू सो मच क्लास.